without heat, the temperature decreases, and that is why it is known as adiabatic cooling. Now, in the next case, we are going to analyze the situation when there is exchange of heat taking place. Okay? When there is an exchange of heat taking place, what happens, what not happens, we are going to study that. So let us suppose we have, first of all, our container, something like this. Let me know, maybe the students are still joining. Now, so this is a piston, okay? And let's suppose we are, and there is gas molecules यहाँ पे, गैस भी डाल देते हैं. ठीक है. Now, let us suppose we start heating it. ठीक है. We start heating it. तो ध्यान सुनिएगा जरा. One thing that can happen if I fix this, है ना? If the piston fixed, what in one situation what we are doing? We are fixed piston. So the boundary in this case it is rigid. The boundary is in this case it is rigid. Then what is going to happen when we are going to heat this particular system? As we heat it, the temperature will start to increase. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Correct? Makes sense, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. है ना? What will happen? The temperature will start to increase. अच्छा. If I don't fix the piston, then this will expand for sure. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Ah, this will start to expand. Now, when it expands, the temperature, let's suppose it, like whatever heat you are giving, it is completely utilized in doing the work of expanding gas or lifting up the piston. So all the heat is what? All the heat, if it is converted to lift up the piston, then there will be no increase in temperature because whatever heat you are giving, it is utilized for work done. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. है ना? अगर सारा का सारा heat, all the heat it is utilized in doing the work, then their temperature will not increase. In other cases, some work will be done, some temperature will also increase. We are going to look at that also, but right now we are going to look at the extreme cases that when you are going to heat it, and if the piston is rigid, let me write it and then you all can write it. If the piston is rigid, piston is rigid, then in that case, volume will be constant. Please tell me. Volume is constant. Volume is not increasing. हाँ या ना? जल्दी बताइए. Make sense? Yes or no? अरे बोलो भाई. If the piston is rigid, then Yes, volume will be constant. Yes or no? अभी जो भी था. yes, अरे sir. बोलो यार.
If volume is constant, then it is called what process? What name of process? अरे बोलो. हाँ जैनब बताइए. What will be the name of process if the volume is constant? Please look at your notes and tell me what will be the name of process. कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है ना. हाँ जोर से बोलिए प्लीज. ट्राई टू स्पीक क्लियरली. What Zainab? No, no. One thing for sure. Look at your notes and then tell me. तो की जरूरत नहीं है बैठे बैठे यहाँ पे. Flip the pages, look at your notes and tell me if the volume is constant, what type of process it is. What do we call that type of process? Please flip your pages. आंसर आ जाना चाहिए था अब तक. बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं. जैनब ठीक है, गॉट योर आंसर. जोर से बोलिए, साफ साफ बोलिए यार. माइक ऑन कीजिए, म्यूट. आप स्पेस बार दबा के प्लीज आंसर मत किया कीजिए. कितनी दफा इन चीजों को बोला जाएगा. हाँ. Isometric, sir. आइसो व्हाट? आइसो व्हाट? Isometric. आइसो. Isometric. आप देख के बता रही हैं सभी? हाँ. नोट्स पढ़ के बता रही है ये बात? No, sir. अरे यार वही तो हम कह रहे हैं ना. रीड द नोट्स, फ्लिप द पेजेस into your notes and then tell me. ये गलत आंसर दीजिएगा, वही याद रह जाएगा. और किसी को ये नहीं तकलीफ हो रही है भाई, देख ले थोड़ा. हाँ. जैनब सही है. अबीर, अलीना, अली, जोबिता. Sir, हाउ मेनी? isochoric. आइसोकोरिक. यस. आइसोकोरिक प्रोसेस. आपने देखा अभी तब जाके बताया ना. हाउ मेनी ऑफ यू लुक एट द नोट्स एंड देन टेल मी. कितने लोगों ने नोट्स देखा? हाथ रेस करें. नहीं, मैंने देख के नहीं बोला. I think तो I फिर didn't write it in my notes. That's why I remembered it. आप नोट्स नहीं. अरे नोट्स लिखो भाई. 2 दिन में याद है, फिर तीसरे दिन भूल I जाइएगा. think I missed that part. That's why. अच्छा. हाउ मेनी ऑफ यू लुक्ड एट द नोट्स एंड देन टोल्ड मी. क्या है भाई? किसी नोट्स नहीं देखा, लेकिन कोई माइक ऑन करके नहीं बोल रहा है. मतलब यार गुस्सा नहीं मत दिलाया करो यार. तुम लोग क्या ही. हाउ मेनी ऑफ यू लुक्ड एट द नोट्स एंड देन टोल्ड. एक बात कितना दफा बोलो. ओके श्यामा. हम एक बार पूछेंगे यार आप लोगों से. 10 बार पूछो सबसे एक एक नाम लेके, हम कुछ नहीं. एक बार पूछेंगे फिर हम आगे बढ़ना. समझना नहीं समझना मत लेना. दिमाग खराब करके रखते हैं आप लोग. स्टार्टिंग हुई है क्लास की, उसमें आंसर नहीं कर रहे हैं. बोल रहे हैं आप देखिए नोट्स देखिए बताइए. ठीक है ना. उसकी उसकी बात नहीं है. माइक नहीं काम कर रहा तो माइक वाइक काम नहीं कर रहा है. आपको बोलने का मन नहीं कर रहा है. आपकी तबीयत खराब है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए मेरे. ठीक है. और टू ऑल ऑफ यू गाइस, इफ द पिस्टन इज फ्लेक्सिबल and all heat is used to lift the piston. Now, therefore, temperature is constant. What will be the name of process? I will wait for 5 seconds. 5. What is the name of process when temperature is constant? 5, 4, 3. Yes. Thank you very much. Isothermal. Now you can write 1 point. In isothermal process, temperature of the system does not change. Okay, wait a second.
ये बनाइएगा। शाइमा, आर यू गोइंग टू मेक दिस? No, sir, I just wanted to see the heading. देयर इज नो हेडिंग अभी तो। does not change, therefore we can say energy of system is constant. हाँ या ना बताइए, make sense, yes or no? Yes, sir. Right. So we can say that del u it is equal to 0, and since del u it is equal to q plus w, we can write 0 it is equal to q plus w, and q will be equal to minus w, है ना? तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना? Like for example, if q heat is given, w amount of work will be done, negative sign, because the work is done by the system. q makes sense, yes or no? Please tell me. All the heat is going to get converted into work done. Does it make sense, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Copy this down. Raise your hand once you're done. ना अच्छा से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, एकदम जवाब ववाब नहीं देते, दिमाग मेरा ये हो जाता है। स्कूल में होगा तब आएगा थर्मोडायनेमिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट इन स्कूल? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन थर्मोडायनेमिक्स? अच्छा, नो वन हैज डन। ठीक है, अभी स्टार्ट होगा थर्मो में, स्कूल में तब समझ में आएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स। वेटिंग फॉर अलीना, शाइमा एंड जैनब। सवाल लिखिए। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल gas at a pressure of 10 atm expands isothermally at external pressure
of one ATM, how much heat is absorbed by the system and how work is done by the system. If the gas expands to 10 liters, आराम से सवाल को लिखिए, उसका हाथ रेस कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ठीक है? Waiting for Abir, Alina, Ali and Jobita, Shaima, Zainab. आराम से सवाल को लिखिए, then raise your hand. Don't do the question, ठीक है? Just waiting for Zainab. Zainab done? No, sir. जल्दी कीजिए जरा. Done? ठीक है, ध्यान दो. 2 liter of an ideal gas at a pressure. 2 liter is important है ना? At a pressure of 10 atm will be important. At a pressure of 10 atm expands isothermally. Expands thermally. When it is isothermally, that means delta U is equal to 0 and Q it is equal to minus W. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. अभी हम लोग ने जैसे ना बोलिए. Does it Yes, make sir. sense? Yes or no? ठीक है. Yes, sir. At external pressure of 1 atm, external pressure is how much 1 atm? How much heat is they're asking about heat by the system and how much work is done by the system if the gas expands to 10 liters. That means initially our gas was 2 liter, V1 is equal to liter and V2 is equal to 10 liters and it is expanding. External pressure hai, 1 atm pressure is there externally, but still it is expanding. That means it is doing work at P external, it is equal to 1 atm. It is doing work against this 1 atm and we have seen in the last work that is the pressure volume work which is equal to minus of P external delta V. So what is the delta V, guys? Tell me. What is the delta V? Bolo. 8 liters. 8 liters, right? 8 liters. Achha. By the way, this will be 1 ATM into 8 liters. So this will be equal to minus 8 liter ATM. 1 liter is equal to how many joules? 1 liter ATM it is equal to how many joules? देखो किसी को नहीं पता. नोट्स वोट्स कुछ नहीं पढ़ना है. पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं आप लोग? पेज जल्दी 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 पलटो, पेज देखो कहाँ पे. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. 1 liter ATM is equal to how many joules? 101 point. हाँ. So approximately we can say 100 joules, right? So it will be 800 minus 800 joules. Does it make sense? इसको नहीं पता भाई, कौन है यार आप लोग? ठीक है. Now this is the work done. How much heat was absorbed? Q it is equal to minus W. So this will be equal to minus of minus 800. This will be equal to 800 joules of heat was absorbed by the system. So you can say that 800 joule of
heat was by the system. ठीक है. Copy this down, then we have to expand on this particular problem. सबको समझ में आया? हाँ ना? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? बलीना, जोबिता, अबीर, अली, सबीहा, शाइमा, बताइए. Yes. ठीक है, प्लीज एक बात आपसे कह रहे हैं, आप नहीं रहे हैं. आई कैन, जब साफ नजर आ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स स्कूल में तो अभी हुआ नहीं है, हम क्यों ही पढ़े थर्मोडायनेमिक्स? एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे. अगर ये हरकतें रही तो फिर भूल जाइए. You have to redo all the problems that we are doing in the class. You have to reread the notes. रीडू का मतलब रीडू द प्रॉब्लम, बिकॉज क्लास में तो हम करते हैं प्रॉब्लम्स को, आप कहाँ करते हैं कुछ. ठीक है, तो यू हैव टू रीडू द प्रॉब्लम्स. अबीर, अलीना, सबिहा, quickly raise your hand. So 1 liter ATM, approximately it is equal to 101325.325 जूल. बट मतलब एक्चुअली इक्वल टू, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप ले सकते हैं 100 जूल. ओके शामा, जैनब जस्ट वेटिंग फॉर यू. चलिए, एवरीथिंग इज सेम. अभी तक जो सवाल था वही सवाल है, बस यहाँ पे सेकंड पार्ट इज दैट calculate the work done. If gas expands in vacuum. ठीक है, so whenever you have vacuum, that means the external pressure will be equal to how much? Tell me guys. Vacuum में what will be the external pressure? What will be the external pressure in vacuum? Vacuum. सोचो जरा, सोचो. In space, what is the pressure in space? When there is vacuum, what is the pressure? बोलो भाई. What will be the pressure when it is vacuum? Yes, so am I correct? Zero. So in vacuum, free external, it is equal to zero in what? In vacuum. And W will be equal to minus of P external into delta V. No matter what the volume is, as expanding to, the work done will be equal to zero. ठीक है? In vacuum, work done by system in expansion
is equal to 0. So situation it is known as free expansion. All of these things are important. You have to memorize what is the work done in free expansion. क्या पता what is the work done in free expansion? Free expansion में free का होता होगा वर्क नहीं, zero है ना. What is the work done in free expansion? It is equal to 0. ठीक है. You have to memorize these particular wordings also. कब होगा? जब आप बार बार सवाल करेंगे. जल्दी लिखिए इसको. Waiting for Abir and Ali. Just waiting for Abir now. इसी में extension one more thing is the work done. Expansion takes place reversibly. अब तो फॉर्मूला लगा देना बस. V reversible it is equal to minus of 2.3 into n into r into t log of V2 on V1. nRT को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज PV is equal to nRT. Right, so I can write this as minus 2.303 into PV log of V final it is equal to 10 divided by V initial it is equal to 2, so 5 the, and once we can write 2.303 multiplied by what is the pressure of the gas, not the external pressure. Pressure of the gas is what? 10 atm है ना. 2 लीटर था और 10 atm. 10 atm. And what is the वॉल्यूम? तो वॉल्यूम को आपको 2 लेना है, इनिशियली जो था वही लेना है ना. 10 into 2 into log 5. So this will be equal to 2.303 into, यहाँ पे देखिए 10 it is atm and this is liter. ठीक है. तो ये तो आपके पास 20 हो जाएगा into 0.7 liter atm will become 100 joule. So ये basically approximately 2 minus 230 into के करीब कुछ आएगा जूल्स में. It will be equal to I think minus 3220 joules. ठीक है. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. Waiting for Abir and Ali.
ठीक है. Now in this case, you can see that the work done in the irreversible manner was equal to 800 joule. 3224. हाँ मतलब I think accurately speaking it will be that much only. Okay, Zainab. Yes, sir. Now what we can see that when the work done is reversible, then it is 1220 joules. And negative sign का मतलब क्या है? That negative sign just denotes that the work is done by the system and not on the system. So the work done by the system is 3200, and in the irreversible manner it was only 800 joules. So we can say that when we have a reversible process, then the maximum work is done. So we can write like this: maximum is done in reversible process. Okay, so if they give you any situation, and in that situation if they give you calculate work that can be done, then you have to calculate the work done in the reversible formula ना. reversible formula से आपको work done निकालना पड़ेगा. Okay, चलिए. So now we are going to summarize a few things. ध्यान सुनिएगा जरा. We have seen that delta U, it is equal to Q plus W, and we have also that delta U, it is equal to Q plus minus P external into delta V. ठीक है. So we have seen these two equations. अब ध्यान सुनिए जरा. We are going to make different cases according to the process. तो ध्यान से बस देखिएगा, लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है. First of all, we are going to isothermal पहला देखेंगे हम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. थोड़ा नोट फ्लिप करते रहिए, लिखिए मत इसको. लिखने से कोई फायदा नहीं होगा. अगर आप पता नहीं है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है तो कोई फायदा नहीं है. ठीक है. ट्राई टू फ्लिप द पेजेस एंड देन लुक व्हाट आई एम गोइंग टू राइट फर्दर इन आइसोथर्मल प्रोसेस. क्या होता है कंक्लूडेड. ऑल द कंक्लूजन वी हैव ऑलरेडी मेड. बस एक कंक्लूजन नहीं बनाया हम लोगों ने, वो भी हो जाएगा तुरंत. बट वट एवर आई एम राइटिंग, प्लीज फाइंड इट इन योर नोट्स. री एक्सपेंशन, isochoric process, adiabatic process, and isobaric process. When isothermal expansion takes place, in that case temperature is constant, therefore delta U, it is equal to 0, and the Q, it is equal to minus of work done. In free expansion, the P external, it is equal to 0, therefore work done, it is equal to 0, and delta U in that case will only be equal to whatever heat you are supplying to the system. Now in isochoric process, delta V equal to 0, and therefore W will also be equal to 0. I hope you can see है ना. Delta V is equal to 0, so delta W 0.
So delta U will only be equal to Q, and Q V लिख देते हैं to show that the volume is constant in this case. In adiabatic process, Q it is equal to 0, and the delta U it is only dependent on the work done, and we write it as AD to show that it is adiabatic work. Now isobaric process, in this the pressure is external pressure is constant. Now when the external pressure is constant, then in that case the heat involved in that constant pressure it is known as enthalpy, the change in enthalpy. ठीक है, तो एक वर्ड है यहाँ पे बस, that if a process is happening with external process, if the process is happening in isobaric and pressure constant, external pressure is constant, then we call the heat exchange in that particular process as the enthalpy. Enthalpy का ये आपके पास क्या है definition है, that is a heat exchange between system and surrounding at constant pressure. ठीक है, please copy these down. Each and every point here is very important from the numerical perspective. न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको यहीं से उठा के करना है. आइसोपोरिक आइसोपोरिक बोल के इंटरनल एनर्जी पूछेगा. ठीक है, जल्दी छापी. Sir, can you explain the isobaric process? We are going to go into detail of isobaric process. So तभी I have just introduced a term here, enthalpy. We are going to talk about enthalpy only after this. Okay, Zainab? Yes, sir. By the way, isobaric, if you want to know what is isobaric, then it is a process in which external pressure or the pressure is constant. Okay? Yes. बाकी enthalpy we are going to look in the complete chapter. पूरी chapter में भी enthalpy है. W means work done. AD means in adiabatic process. Shaima. Waiting for Alina. Right next, enthalpy. The heat exchange between system and surrounding at constant pressure is called enthalpy change. Denoted by delta H. So
at constant pressure, अगर हम बात करें डेल्टा यू की, इट विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, लिखिएगा मत। बताइए डब्ल्यू की क्या, व्हाट कैन वी राइट डब्ल्यू? डब्ल्यू को व्हाट शुड आई राइट? डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू व्हाट डू वी राइट? इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू व्हाट डू वी राइट? External delta V जोर से बोल। minus P external into delta V. वेरी गुड। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी कर देते हैं सीधा, है ना? समझ जाइएगा। Now, in this case, the pressure is constant. So, this is the heat exchange in constant pressure. So, delta U is equal to this QP can be written as delta H minus P delta V. है ना? Yes, sir. सही है? ठीक है। I can write delta H is equal to enthalpy change. It is equal to delta U plus P delta V. क्या ख्याल है? Yes. Now, आगे सुनिएगा। According to ideal gas equation, PV is equal to nRT and लेट्स सपोज आपके पास इनिशियल से फाइनल तक कुछ जा रहा है, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मान लीजिए आप, है ना, एनीथिंग यू कैन थिंक, a process is happening from reactant to product. So here we can say that PV reactant is equal to number of moles of reactant into RT. Here we can say P into V of the product, volume of the product, it is equal to number of moles of the product into R into T. ठीक है, into R into. Now if I talk about the, if I subtract these two, then I will get pressure into Vp minus pressure into Vr is equal to NPRT minus NRRT. देखिए जरा, initial, final, initial. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now PVP minus VR can be P into delta V. Pressure को हमने common ले लिया, so we will get Vp minus VR, and here I can write this as delta N. I'm writing G because we are only going to look for gases in this case into RT. We are going to take RT as common, and then you will get NG as the part, I mean NP minus NR, that will be delta NG. ठीक है? So this is a very important equation को हम explain करेंगे, but please write this down आराम आराम से बिल्कुल. Raise your hand once you're done.
अबीर वेट टू। अबीर। One second. ओके। अच्छा, ये नीचे का नहीं लिखा होगा ना आप लोगों ने? यहाँ तक लिख लिया ना? हाँ, लिख लिया, ठीक है ठीक है। अभी लेट मी नो इफ यू डन। Sir. ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पी डेल्टा वी आई कैन राइट, सी यहाँ पे पी डेल्टा वी है ना, सो इंस्टेड ऑफ पी डेल्टा वी आई कैन राइट डेल्टा एन सी आर टी। So please see the equation will become delta H, it is equal to delta U plus delta NG RT. अब ध्यान से सुनिए जरा, what is the meaning of each of these words? Please don't write anything, try to understand. Delta H is equal to delta U plus delta NG RT. ठीक है? Delta H is the heat change at constant pressure. Delta U is the heat change at constant volume. देखिए ना, आइसोकोएलेसिस में क्या हो रहा था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। व्हाट इज डेल्टा एन जी प्लस? डेल्टा एन जी इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। आर इज 8.314 एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन। अभी कीजिए इसको, रेज योर हैंड इफ यू डन। प्लीज रेज योर हैंड। अलीना वेटिंग फॉर यू, अलीना। एक सवाल लिखिएगा। इफ वाटर वेपर is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy
change for molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar pressure, 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy when 1 mole of water is vaporized at 1 bar and 100 degrees Celsius. ठीक है, बिल्कुल अब ना पेन वगैरह छोड़ के अलीना, हो गया आपका? देखिए बिल्कुल पेन वगैरह छोड़ दीजिए, आराम से समझते हैं, सवाल को आराम से करते हैं। बट कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने इसको रिवाइज दोबारा नहीं किया ना। इफ यू डू नॉट रीडू दिस क्वेश्चन देन इट विल बी ऑफ नो यूज। ध्यान सुनिए जरा। इफ वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी परफेक्ट, ठीक है, दैट मींस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह चीजें हम लगा सकते हैं। मोलर, मोलर रीड दिस, मोलर पढ़ो, मोलर व्हाट इज रिटन? Enthalpy change. Enthalpy change. Molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water pressure at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius is 41,000 joules per mole. That means if I have to vaporize 1 mole of water, I have to give 41,000 joules of energy. For each mole, I have to give 41,000 joules of energy. That is, does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. Delta H is completely given as what? 41123 joules per mole. Number of moles, it is given as 1. The temperature, it is given as 100 degrees Celsius. That will be equal to how much Kelvin? How much Kelvin? Jaldi batao. Jaldi. 100 degrees Celsius is equal to how much Kelvin? ये भाई 100 डिग्री सेल्सियस ये नहीं पता तो फिर इतना टाइम लग रहा है। हाँ शायमा का। Now we have to see what is changing, what is happening in vaporization. We, all of you hopefully know that H2O liquid is going to get converted into H2O gas. If I calculate the delta Ng in this case, it will be equal to number of moles of gas in the product. It is equal to how much? 1 mole of gas in the product. How many in reactant? 0. So delta Ng will be equal to 1. Now from here you can plug in the formula.
delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. Now they are asking delta U, so I will write delta U. It is equal to delta H minus delta Ng RT. Delta H is given as 41000. Delta Ng is 1 multiplied by R will be equal to 8.314 multiplied by 373, that is the temperature. ठीक है, कैलकुलेट कीजिए. हाँ भाई, जल्दी कैलकुलेट कीजिए प्लीज. This is the final answer, Sanam. Yes, sir. Okay. So 41000 minus 8 threes are, okay, it is approximately 4 are. ये कितना 3100 के करीब कुछ आ रहा होगा ना, राइट जैनम? 01. हाउ मच? 3101. 3101. Okay, okay. I was too close. 100 ही मान लेते ना, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी. नाउ इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3700, sorry 37,900 I guess, right? है ना? जूल्स पर मोल.
37898, हाँ ठीक है चलेगा। कॉपी से जॉन जल्दी भाई, जल्दी कॉपी कीजिए। जस्ट वेटिंग फॉर जैनब। प्लीज यार ना इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज भूल जाइएगा, यू विल फॉरगेट ऑल द फंड लाइक व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। राइट अनदर क्वेश्चन। Reaction of cyanamide with oxygen gas gives out heat at constant volume, which is measured to be minus 742.7 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change for this reaction. The reaction is NH2CN, cyanamide, which is by the way solid, plus O2, तो फिर ऐसे लिख लो 3/2 O2. This reaction is actually given, ठीक है ना, gives 1 mole of N2 plus 1 mole of CO2 and 1 mole of water. इसमें आपके पास N2 गैस है, CO2 भी गैस है, वाटर इज गोइंग टू बी लिक्विड एट 298 केल्विन, है ना। टेल मी व्हिच वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर। एक वर्ड है जो इंपॉर्टेंट होता ही है, देयर इज वन वर्ड व्हिच इज इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड है? Constant volume. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है जरा बताइए, क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, जल्दी बोलो। डेल्टा यू इट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो भाई। Negative Q. Yep, delta U it is equal to Q. What at constant volume? Now, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा. Hopefully you have written the question. So we can say that delta U it is equal to Q, that is heat given out. What is the heat given out? It is minus 724.7 kilojoule. That will be equal to minus 742,700 joules per mole. The temperature it is given as 298 Kelvin, and they are asking the delta H. Okay, we can calculate the Ng, which will be equal to how much? How many gases we have? अच्छा, O2 is going to be a gas here. So यहाँ पे 3/2. Here we have 1 mole. Here we have 1 mole. So in the product side we have 2 moles of gas. In the reactant we have 3/2, that is equal to 1.5, which will be equal to 0.5. यहाँ तक ठीक है, आया ना बताए?
Does it make sense till here? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, Alina. What did you say? Yes, sir. ठीक है. Now I have to calculate the enthalpy change. The enthalpy change, it is equal to delta H will be equal to delta U plus delta NGRT. 742,700 joules per mole plus 1 2 into 8.314 into 298. 1/2 is the number of moles, delta Ng है. कैलकुलेट जरा कीजिए इसको. 149 को 150 ले लीजिएगा. कैलकुलेट एंड एक आंसर आया. हाँ टाइमर चलेगा, करेक्ट है. तो क्लियर गाइस. यहाँ पे आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा. कितना आया है? 741,453 है ना, माइनस 741,453. कॉपी दिस डाउन और एक लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट लिख लीजिए. 742,825. भाई बढ़ कैसे जाएगा? अबीर आपने ऐड कर दिया, माइनस है उधर, प्लस है. अबीर, Yes, अबीर sir. क्या कर रहे हैं Yes, sir. भाई? जी जी. डेल्टा एच के बारे में देखिए जरा, 2 कंक्लूडिंग पॉइंट्स लिख लीजिएगा जरा. देखिए इस फॉर्मूले में तो आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, लेकिन
इस फॉर्मूले को भी मत भूलिएगा, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला आल्सो। नाउ प्लीज रिमेंबर, इफ delta and g is equal to zero, if there is no gas involved, then the enthalpy change, it is equal to internal energy change. And in this case, if delta v it is equal to zero, then also the enthalpy change, it is equal to internal energy change. Copy this down. Just waiting for Zainab.